Hello students, myself Mashir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in the French Revolution, and the topic is inspiration of philosopher. In the previous video we discussed about the role of middle class, how a class generated through trading activities, they are educated, and mainly the lawyers and administrative officer is the part of middle class. And then another things add on this inspiration of philosophers. It means behind the idea of French Revolution, liberty, equality and fraternity, the role of philosopher is important. In this video, we discuss about three philosophers and their ideas. Now, let's start. Their ideas envisage a society based on freedom and equal laws and opportunities. It means their ideas based on freedom, equal laws and opportunity. That ideas existed in that today's modern world. So if a philosopher talk about these ideas on that time, it is a revolution. And their ideas, society based on, it means they expect society based on freedom, equal laws and opportunities. Now these three philosophers like John Locke, Jacques Rousseau and the Montesquieu. These three philosophers today we discuss. First of all, we discuss about the John Locke. John Locke wrote a book, and the name of the book, Two Treatises of Government. Two Treatises of Government. It means two agreement. What type of agreement? In this book, he criticized the divine and absolute rights of the ruler. First agreement between people to people and form a society. This is called civil society. People to people agreement form a society is called civil society, and they choose rulers or government, and the another contract between the rulers and the societies. If the rulers performance not well, then people have a right to remove the rulers. That is the idea in his book, The Two Treatises of Government. Also in this book, they criticize the divine right. Divine right, you know that according to divine right in France, entire society divided into three states. First and second state exempted all kind of taxes, but only third state paid taxes. So they criticize the divine right, and also they criticize the absolute right of the rulers. Absolute right, it means unanswerable towards anyone. If the people choose the ruler, then ruler always accountable towards people. That idea formed through John Locke's these book. It means today's government, representative government, and their ideas born through these ideas. Those are given by John Locke in his textbook, Two Treatises of Government. Now, another philosophers, we talk about Rousseau. Rousseau viewed his point in his book, and the book name is Social Contract. He had put forward the idea of formation of a government based on a social contract between people and their representative. Rousseau believed that
human is a noble savage, and their ideas that government based on social contract, it means government based on social contract, it means agreement between people and civil societies, people to people form society, and society form government. Now the second agreement between the government. So they said that based on a social contract between people and their representative, it means there is an agreement between people and their representative. Through this book, the name of Social Contract, and also Rousseau gave a slogan, back to nature. It means back to nature, it means return on that situation where everyone free to choice, free to move, just like a might is right situation in forest. Now the another philosophers we discuss Montesquieu. Now Montesquieu, his ideas are proposed in his book, and the book name is The Spirit of Laws. The Spirit of Laws. According to him, there should be division of power between three important organs: the legislature, the executive, and the judiciary. And the Montesquieu says that every organ of government separate. It means, according to his book, they believe in a separation of powers. They believe in separation of powers. It means organs of government. There are the three organs of government: executive, legislative, and judiciary. These are separate from each other. Why that kind of idea they have? They believe that if all power vested in a single hand, that situations convert into tyranny or convert into dictatorship. It means if all power vested in a single hand, maybe possibility the ruler become dictator. So they believe all three important organs are separate from each other. So they believe separation of powers, and these ideas exist in today's modern democracy where all three organs of government are separated according to constitution: executive, legislative, and judiciary. Executive had a separate work to implement the law, and legislative separate work to make the law, and judiciary's important work to review the law. Those are made by legislative and those are implemented by executive. Judiciary's work to review the law, those are made by legislature and those are implemented by executive. So now that is the French Revolution and the topic is inspiration of philosopher. आज हम लोग इंस्पिरेशन ऑफ फिलोसफर्स नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशंस में. इन फिलोसफर्स की ये आइडिया था, क्योंकि इससे पहले हमने मिडिल क्लास देखा जहां वो एक नया क्लास जनरेट होता है जो एजुकेटेड था, जो अपने राइट्स को लेकर एजुकेटेड था, और फिलोसफर्स ने उस आइडियाज को और प्रमोट किया. उनका ये मानना था कि सोसाइटी जो है वो फ्रीडम और इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड होनी चाहिए. थ्री फिलोसफर्स का आज हम डिस्कशन कर रहे हैं: जॉन लॉक, जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू. जॉन लॉक ने एक बुक लिखी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी दो समझौता या कॉन्ट्रैक्ट कहिए आप, जिसमें उसने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की डिवाइन राइट की और एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द रूलर. एब्सोल्यूट राइट ऑफ द रूलर इट मींस अनआंसरेबल टुवर्ड्स पीपल, एंड द डिवाइन राइट इट मींस बाय बर्थ राइट. यानी डिवाइन राइट जो बाय बर्थ राइट था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग
कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे अकॉर्डिंग टू डिवाइन राइट। इसका विरोध किया गया इस बुक में जॉन लॉक ने। और एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द रूलर्स के एब्सोल्यूट राइट का विरोध किया गया इसलिए क्योंकि ये दो ट्रीटीज यानी दो समझौते की बात करता है जॉन लॉक। पीपल टू पीपल एक एग्रीमेंट होता है जिससे सिविल सोसाइटी फॉर्म होती है, फिर उस सिविल सोसाइटी से गवर्नमेंट फॉर्म होती है, तो पीपल और गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट होता है, या सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो हम आपको हटा देंगे। ये एक मॉडर्न गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी आइडिया से स्टार्ट हुआ था, जॉन लॉक की इसी आइडिया से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न गवर्नमेंट की जो फॉर्मेशन है वो इसी आइडियाज पर बेस्ड है। तो जॉन लॉक इस बात को क्रिटिसाइज करता है कि डिवाइन राइट जैसी कोई चीज नहीं होती है, और एब्सोल्यूट राइट अगर रूलर्स को पब्लिक ने चूज किया है तो वह रूलर्स अकाउंटेबल होना चाहिए पब्लिक के प्रति। अब दूसरा जो रूसो राइटर है वह अपना व्यू पॉइंट अपनी एक बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे सामाजिक समझौता कहते हैं उसमें वो लिखता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है वो बेस्ड होना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी वह भी एक एग्रीमेंट की बात करता है जो लोगों और उनके प्रतिनिधियों के बीच होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्टेस्क्यू, जिसकी बुक का नाम द स्पिरिट ऑफ लॉस था, जिसमें उसने एक थ्योरी दी, जिसमें एक उसने सिद्धांत या प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का पृथक्करण। उसने बुक में ये लिखा कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दीज 3 आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर सारे पावर एक ही हैंड में रहेंगे तो मे बी जो है वो एब्सोल्यूट हो सकता है, अनआंसरेबल हो सकता है। इसलिए उसका मानना था कि पावर सेपरेट होना चाहिए, इसीलिए वो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करता था सेपरेशन ऑफ पावर। इसीलिए उसने सजेशन दिया कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो सेपरेट होने चाहिए। सो नाउ दैट इज द टॉपिक इंस्पिरेशन ऑफ फिलोसोफर्स। हमने इसको आज डिस्कस किया है।